हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो एंड you people are practicing problems, learning concepts. This question I received in doubt, and this one is one interesting basic question, I would say. Done it? So in order to solve this question, you just need to be logical. So this is around body staying in contact with the surfaces. Okay, and in terms of force, we know that what is meaning of it. I mean, if two things are in contact, it means normal reaction is not zero. है ना, हमने बहुत सारे ऐसा भी क्वेश्चन किया है जहाँ पे कांटेक्ट लूज कर रहा है, देन वी टेक द सिचुएशन लाइक नॉर्मल विल बिकम जीरो. Done it? And here we have to talk about velocity. So how we can talk about velocity if they are staying in contact? जैसे आप एक सिंपल सा सिचुएशन ले लो, सपोज कर लो आप लिफ्ट में हो एंड लिफ्ट इज गोइंग अप विथ स्पीड लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड. अगर मैं पूछूं आपकी स्पीड क्या है, आप कहोगे 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ. डन है. एंड वाई इट इज सो, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट, एंड जो लिफ्ट की वेलोसिटी है वही आपकी होगी, बिकॉज यू बोथ आर इन कॉन्टैक्ट, राइट. सो अगर दो चीजें कॉन्टैक्ट में है, उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी जीरो. Done it? So this is the basic concept. Now let us read the question. A system is shown in figure. Assume that cylinder remains in contact with two wedges. So this cylinder stays in contact with this wedge and with this one. Okay, इसकी velocity इधर की तरफ दी हुई है. Okay. Now the left wedge moves with velocity u meter per second towards the left, while the right one moves with velocity 2u towards the right. Okay. Each wedge makes an angle of 30 degree with the horizontal. Find the velocity of cylinder. So cylinder की velocity क्या होगी? वैसे आप सोचो, when these wedges will start moving in this direction and this direction, there is a chance cylinder will come down also. Okay, so I mean, this cylinder can have motion in two dimensions. So let us take that thing here. Let us say in the downward direction it has velocity vy, and in the horizontal direction it has velocity vx. किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो. डाउन तो आना है, ये तो क्लियर है, अब तो नहीं जाएगा. ठीक है, ये अब तब जाता जब दोनों का ही वेलोसिटी अगर आप इधर की तरफ लेते, तो क्लियर था कि दिस सिलेंडर वुड गो अप इन दैट केस. डन है. बट यहाँ पे दूर दूर जा रहा है ना, देन वी विल से दिस इज कमिंग डाउन. ओके, सो कुछ ऐसा है. Now we need to calculate this Vy and Vx, and for that we will be taking the help of fact that it will stay in contact with both the wedges. अब आप देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे ये पर्सन जो था वो लिफ्ट के अंदर है. कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है? ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आप एक काम करो, सरफेस को पहले बना लो एंड देन ड्रॉ परपेंडिकुलर. So along the perpendicular direction, I mean, there won't be any relative motion happening. डन है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा. सिमिलरली अगर मैं लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सो वेज ए से ये सिलेंडर कांटेक्ट में है एंड इट इज कांटेक्ट एट दिस पॉइंट. ये सरफेस ये है, और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो ये दिखेगा. ठीक है, सो अलोंग दिस नॉर्मल देयर वोंट बी एनी रिलेटिव वेलोसिटी. अगर होता है देन देयर विल बी सेपरेशन हैपनिंग, एंड दिस सिलेंडर वोंट स्टे इन कांटेक्ट विद वेज ए. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिक क्या है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी दोनों का, सिलेंडर का भी और वेज का भी सेम होना चाहिए. सो वेज ए की वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज हाउ मच? 2u मीटर पर सेकेंड. और सिलेंडर का कितना हमने लिया है? vx. सो क्लियरली फ्रॉम हियर vx इज इक्वल टू 2u मीटर पर सेकेंड. दिस इज गोइंग टू बी फैक्ट. ओके, now how we will calculate vy? So let us take the help of contact with B. So B से contact देखो इस point पे है, surface is this one. You draw the perpendicular here. So I have drawn perpendicular here. And along this direction, both cylinder and wedges and wedge B, sorry, will have no relative velocity. Velocity तो होगी but relative velocity नहीं होगी. It means दोनों का velocity in this direction, either up or down, should be equal. So let us talk in the next figure. So यहाँ पे मैंने इसको tangent ऐसे बनाया. ठीक है, so this wedge is moving in this direction basically. So it has a velocity in this direction. So what is the component of velocity of this what? Of this wedge B along this line? So that will be in this direction. और देखो ये एंगल तुम्हारा कितना होने वाला है? This angle is 30. Okay, and this is perpendicular to this thing. This is I mean, this angle will be 30, right? So this angle has to be how much? This angle has to be 60 degree. Done hai? So if it is u, then along this it will be u, uh, that will be sine 30, right?
So or cos 60 या sin 30, आप जो भी बोलो. So u sin 30. Now, what will be the velocity of this cylinder along this line? So, cylinder has two velocity, one in this direction, another in this direction. So, what will be the component of Vx along this line? So, ये angle आप पहले देख लो. So, this angle कितना होने वाला है? This is perpendicular. So, this angle will be your 30. So, this has to be 60. Okay. So, ये angle मैं mark कर देती हूँ 30. Done. So what will be the component of Vx along this line? It will be in this direction and that will be your Vx sine 30. Okay. And what will be the component of Vy along this line? So that will be in this direction, right? So it is going to be, this angle is 30, right? Theta. So this is going to be your how much? This is going to be Vy, this is your cos 30. Okay. So this is Vy cos 30. Now let us look for what is the velocity of y in this direction. जैसे देखो इस direction में, in this direction wedge की velocity इधर की तरफ है कितनी, u sin theta. So velocity of cylinder should also be equal to u sin theta in this direction. So सिलेंडर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, दैट इज योर वन थिंग इज वी cos 30 और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में vx sin 30. So what will be net velocity of cylinder in this direction? That will be equal to vy cos 30 minus vx sin 30. एंड सिंस इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी वेज एंड सिलेंडर का अलोंग दिस डायरेक्शन हैज टू बी जीरो, सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. यानी कि इन दोनों को माइनस करोगे तो जीरो आएगा. इट मींस दिस टू विल बी इक्वल, राइट? सो फ्रॉम हियर यू विल बी राइटिंग u sin 30 is equal to vy cos 30 minus vx sin 30, right? So this is what you're going to do. Now keep the values. So u, this is 2, and vy we don't know. Cos 30 is how much? Root 3 by 2. And this is vx हमें पता है 2u, because इस कंस्टेंट से हमने निकाला था, इन दोनों के बीच के कांटेक्ट की के कांस्टेंट से निकाला था 2u. So that is your 2u and then this is 2. Okay. So आप 2 cancel कर लो. From here you can see 3u is equal to vy root 3. So vy is equal to how much? That is going to be your root 3 meter per second. Okay. So what is the velocity of this cylinder? In this direction it is root 3 and in this direction it is 2. So net velocity will be somewhere in this direction and that will be equal to root 3 ka square, that is 3, plus 2 ka square, that is 4 root under. So that is going to be root 7 meter per second. Sorted? So आंसर क्या होना चाहिए? रूट 7 u मीटर पर सेकेंड. u है ना, दिस इज u, दिस इज u. ओके. सो बेसिकली this into u का square, so this is this. Sorted? So yeah, this is this thing. ये बहुत ही सिंपल होता है. ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आप ऐसे डील कर सकते हो. You don't need to go further into any other complications. This is the simplest one, and we should be sticking ourselves with the simplest one, right? So, and this is also logical. So this is what I would suggest you to do this question. I mean, in this way you should be doing. Anyway, I hope it is clear, but in case you're having any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself.